So there is so much to talk about. I have like so many points to talk about this book, but the first important part is this is not the end of the book. इसके बाद और एक book आने वाले which is the fifth book, The Rise of Meluha. So जब मैंने ये book पढ़ना start किया, I have so many questions कि ये book worth होगी नहीं होगी, इतना time spend ना, like you can see this is like fat book, almost 400 pages book. To be honest, exact number is 474, almost 500 pages book की है. And मैंने इसके पहले के तीनों books पढ़े, and the Sita is my favorite book, second book favorite is Ram Chandra Ram first book, and the Raavan is the third favorite book. So this is the context, and now I'm going to talk about everything. Obviously it's a spoiler free review, so you can watch it 100%. इसमें कुछ भी spoilers नहीं है, थोड़ी बहुत इधर उधर की detail होगी, but that you are going to definitely enjoy. So let's go by pointer to pointer and let's get into this detailed video about this book, War of Lanka. The first one, the book obviously starts with जहाँ पे तीन बुक एंड हो चुके हैं, यानी कि तीनों बुक यहाँ पे एंड होती है सीता का अपहरण. तो वहाँ से ये बुक पिकअप हो जाती है. दैट स्पेसिफिकली अगर मैं बोलूँ तो रावण के इंजरी के बारे में से पिकअप होती है बुक, एंड एवरीथिंग इज एक्सप्लेन्ड सो ग्रेट. सो इसके इंजरी वगैरह उसके बारे में बताया जाता है, उसके क्या क्या हुआ था, सीता का अपहरण कैसे हुआ था, वो सारी चीज़ें आपको इस बुक में स्टार्टिंग में मिलेगी. द सेकेंड पॉइंट आई लव्ड अबाउट दिस बुक इज डिस्क्रिप्शन अबाउट द पुष्पक विमान. लाइक द वे इट इज डिस्क्राइब्ड, द वे दैट इज एवरीथिंग इज लाइक वी हैव सीन दैट इन द मूवीज एंड द शोज, बट उसके बाद टू रीडिंग एंड इमेजिन करना वो सारी चीज़ें दैट इज ऑन द नेक्स्ट लेवल. सो दैट इज समथिंग सेकेंड पॉइंट आई लव्ड अबाउट दिस बुक. थर्ड पॉइंट इज ऑल अबाउट द ओल्ड रेफरेंसेस. अगर आपने शिवा ट्रायोलॉजी पढ़ी हो, मेहुला की बुक पढ़ी हो, लाइक उसकी सारी बुक्स पहले से पढ़ी हो, तो आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें अंडरस्टैंड करने के लिए ईजी हो जाएगा, क्योंकि उसके रेफरेंसेस है. बहुत सारे पॉइंट पे ऐसे लगा कि उस बुक के रेफरेंसेस इस बुक में भी डेफिनेटली है. एंड इफ़ यू हैव रेड द शिवा ट्रायोलॉजी देन आपको वो सारे रेफरेंसेस इमीडिएटली समझ में आ जाएंगे कि ओके इसका कनेक्शन यहाँ पे किया था, इसका कनेक्शन वहाँ पे किया था, हनुमान का कनेक्शन कहाँ पे था, या मेलुहा का कनेक्शन कहाँ पे था. वो सारी चीज़ें आपको इमीडिएटली समझ में आएगी अगर आपने शिवा ट्रायोलॉजी की बुक पढ़ी है. अगर आपने पढ़ी नहीं तो कोई टेंशन नहीं, यू विल स्टिल अंडरस्टैंड एंड एंजॉय, यू आर गोइंग टू एंजॉय दिस बुक. द नेक्स्ट पॉइंट आई लव्ड अबाउट दिस बुक इज लॉयल्टी अबाउट हनुमान, और लॉयल्टी ऑफ हनुमान कि वो किससे ज़्यादा सबसे लॉयल है. सो वी हैव सीन अबाउट द हनुमान की वो क्या क्या चीज़ें करता है, एंड उसकी एंड हियर आई एम टॉकिंग अबाउट द ओल्ड रेफरेंसेस. सो उसे एक टाइटल दिया गया था वायुपुत्राज ने कि उसके उस बुक में, आई मीन शिवा ट्रायोलॉजी में उसका टाइटल दिया गया था, अगर आपको पता हो तो. सो इस बुक में भी सेम ही रेफरेंस है कि उसको उस टाइटल के नाम से जाना जाता है, वेदर इट इज़ मोर लॉयल टू सीता और वेदर इट इज़ मोर लॉयल टू द डिफरेंट पीपल. सो उसके बारे में थोड़ा बहुत रेफरेंसेस दिया गया है, विच इज़ डेफिनेटली अ गुड पॉइंट. आई रियली एंजॉय दैट बिल्डअप वाला सीन. एंड आफ्टर हनुमान्स एंट्री देयर इज अ स्पेसिफिक टॉपिक वेयर दे टॉक अबाउट द सर्जिकल स्ट्राइक, एंड उस टाइम पे मुझे डेफिनेटली उरी की याद आई थी. उरी में भी हम सर्जिकल स्ट्राइक करके वहाँ पे जाते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक करके वापस आते हैं. द सेम context or the same thing used in this book when the Hanuman is introduced. So उसके बारे में definitely you are going to enjoy reading that part of this book. The next part I enjoyed in this book is पोहा इन द ब्रेकफास्ट. सो आफ्टर सीता को जब किडनैप करके ले जाता है एंड उस टाइम पे वहाँ पे ब्रेकफास्ट पे उसे पोहा प्रोवाइड किया जाता है. उसे फर्स्ट टाइम लगता है कि दिस इज अ काइंड ऑफ उसमें जहर वगैरह डाला होगा वगैरह वगैरह, बट देयर इज अ प्रॉमिस दैट मेड विद द रावण विच इज आई एम नॉट गोना टेल यू हाउ टू रीड दैट बुक फॉर दैट प्रॉमिस. सो पोहा का सीन जो एक्सप्लेन किया है कि हाउ द पोहा इज देयर, एंड फर्स्ट कुंभकर्ण खाता है, देन उसके बाद रावण भी टेस्ट करता है, देन वहाँ पे ब्लड वगैरह ऐसी चीज़ें दिखाई गई है, विच इज़ काइंड ऑफ अ गुड काइंड ऑफ रिलेटेड टू द मॉडर्न वर्ड कि वहाँ पे पोहा वगैरह यूज़ किया गया लाइक रिलेटेड टू दैट. एंड आई रियली एंजॉयड रीडिंग दैट. एंड लेट्स मेक इट टू द फास्ट फॉरवर्ड बिकॉज आई डोंट वांट टू गेट इनटू अ लॉट ऑफ डिटेल्स कि ये बुक पढ़नी चाहिए नहीं पढ़नी चाहिए. उसके पहले थोड़ी बहुत चीज़ें और बता देता हूँ. डिस्क्रिप्शन इज़ ऑन पॉइंट. बहुत सारी चीज़ों में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया गया है इस बुक में कि विच इज़ आई डेफिनेटली लव्ड रीडिंग दैट डिस्क्रिप्शन. मतलब छोटी छोटी चीज़ों पर बहुत बारीकी से काम किया गया है. लेट्स से कि हनुमान वहाँ पे जाता है, हनुमान इज़ हाइडिंग बिहाइंड द ट्रीज. दैट इज ऑल्सो एक्सप्लेन्ड सो वेल इन दिस बुक कि उस टाइम में क्या क्या चीज़ें एक्सप्लेन की गई, उस टाइम पे सीन कैसा था, क्या क्या कलर्स थे वगैरह. दैट इज डिस्क्रिप्शन इज सो ऑन पॉइंट. आई मीन द बिल्डअप और द इमेजिनेशन पार्ट इज अ डेफिनेटली 10 on 10 फॉर मी दिस टाइम. द नेक्स्ट पॉइंट कम्स व्हेन इट कम्स टू डिस्क्रिप्शन इज द फाइट सीन.
और द वॉर सीन, विच इज़ द नेम ऑफ दिस बुक, इज़ वॉर ऑफ लंका. सो बेसिकली उस टाइम पे बहुत सारी चीज़ें ऐसे डिस्क्रिप्शन में बताई गई है विच इज़ डेफिनेटली नीडेड. कुछ टाइम पे ऐसे लगता था कि लास्ट से 3 बुक्स में ऐसे लगता था कि यार इतना डिस्क्रिप्शन क्यों दिया गया, इट इज़ नॉट नेसेसरी टू गिव सो मच ऑफ डिस्क्रिप्शन, बट this book deserves that much of description. And if you are love reading or if you love imagining that description, then you are definitely, I'm 100% sure that you are definitely going to enjoy this. And if we talk about the lessons, so lessons, there are so many lessons in almost after half of the book. So first half of the book is little bit of slow, but the second half of the book is get fast and fast and fast, and बहुत सारी चीज़ें build up fast हो जाती है. And उसके time से then you will start enjoying a lot of this. And when we talk about the lessons, like हर book में उसने कुछ ना कुछ lessons दिए होते हैं. And this book also have a lot of lessons. Like राम एक point पे कहता है कि he want to fight with Dharma, not with Dharma. So there is one topic. Then there is a chapter. So there is a message in the chapter 36. So which I definitely loved. अगर आपने book पढ़ी है और पढ़ने वाले हो, then definitely go and read the chapter 36. उसमें एक definitely message दिया गया about the life, how we complicate our life and how we, truth is important and we are living in the lie. So much of importance given for such messages or the lessons, I will say. So if you are looking for the lessons from the Ram Chandra series, then definitely read the chapter 36, which is one of my favorite, I will say. Not 100% favorite, the fight scene is favorite, but the message in the chapter 36 is definitely worth reading. Then the explanation of the fire scene. So the way the fire scene is explained, वहाँ पे सीता के वहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती है, and the fire scene जो हमें पता है कि रामचंद्र सीरीज में is definitely there. So उस कहाँ पे point में था वो जानने अगर आप then definitely go and read that fire scene. I'm going to talk about where the fire scene is, but it's definitely there and you are going to definitely enjoy that. That's more about this. So now let's talk about what I hated about this book. So at some point you may feel like यार कुछ ज़्यादा ही description दिया गया है या other characters को कुछ ज़्यादा ही importance दिया गया है, but I feel like at some point it depends on the point of view. आपको कौन सा character पसंद आता है उस पर depend है. So I definitely loved, even though I definitely love the Kumbhakaran character, which is definitely good. Then the second character I loved is Vedavati. I hope I'm pronouncing the right name. So the Vedavati character is second, I definitely liked. And the third character I liked is Sita. Which three character I feel which is kind of really good and which is important in this book. So these three characters are my favorite. So should you read this book or should you skip this book? Well, if you have read the first 3 books, then definitely go and pick up this book. You won't regret it. Even though it's a 500 pages book, but the build-up story is amazing. First half is little bit of disconnect you might feel at some point, but उसके बाद जैसे जैसे fight की तरफ हम जाते हैं, then it gets more and more interesting and more enjoyable. So definitely go and pick up the Amish War of Lanka. The link is in the description. All the opinions are mine. Obviously मैंने इसके बारे में criticism भी किया है. Like first 3 books में मैंने बहुत सारे criticism किए थे, but this book I felt little bit good as compared to the first 3, or most probably because of the reach. It took almost 1.5 or probably more than 2 years to launch this book. So Amish has worked on lot of things. Even the first chapter or the first few chapters probably he have re-edited many times as per my knowledge, because the interest keep on building. So definitely worth the read, worth your time. So अगर आपने book अभी तक पढ़ी नहीं है तो definitely go and buy the book. You are definitely going to enjoy the War of Lanka. ये मैंने audio book पे सुनी थी, like first 60%, because audio book में you can finish this is around 10 to 15 hours में. अगर आप पढ़ने जाओगे तो obviously it will take a lot of time. So I finished a lot of the content on the audio book, and after that I have the book also. So definitely go and read this book. You are definitely going to enjoy the War of Lanka. And here is something really interesting. This is not the end of the book. Let me tell you, this is not the end of the book. There is another book coming after this book, which is going to be the Rise of Meluha, and which is about, we'll talk about that in some other video, but that is going to be there. So make sure you read this book if you want to know the 5th book, or if you want to understand what is going to be the 5th book. You will understand this. This is not a spoiler. Talking about the 5th book is not a spoiler, because he already mentioned that about that book in this book. So definitely it's not a spoiler, but you are definitely going to enjoy this. If you want to more information about this book, then make sure you join my newsletter, where I share a lot of update about the book and what I'm reading and what I'm doing. And make sure you follow on the Instagram if you want latest updates about the books and a lot of things and the behind the scenes. So stay tuned and see you in the next video. Bye bye.